अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं इस क्लास के लिए, क्योंकि जूम पे एक दफ़ा जो क्लास क्रिएट होती है वो 40 मिनट्स में एक्सपायर हो जाती है। तो हम जल्दी से जो है वो अपने कोर्स की तरफ जाते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। हमने कहा था कि हम रिसर्च क्यों करेंगे, व्हाई विल डू रिसर्च। कोई आंसर कर सकता है? हाउ रिसर्च इज डिफरेंट देन अदर एक्टिविटीज़। हमने कहा था कि रिसर्च इज अ वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, but it is in systematic way. It is by taking observation by scientists or by ourselves. In case of daily life, when we try to get answers of certain questions, we don't do in a systematic way. We don't take observations by ourselves. We ask somebody who has knowledge of certain things. So research is systematic. Why we do research? When there is a gap, when there is no information existing. If information is existing previously, then we don't need to use our resources in terms of energy, in terms of finance, in terms of human resources, because research is a hectic thing. It is not that easy.
so it takes a lot of resources. So we have to conserve those resources. We are not going to do research if we have already answers to our questions. So there should be a gap, then we will do research. Another thing is sometimes we repeat research. uh, for example, if somebody has already done, we can repeat it to detect or to check the validity of procedures, methods, and techniques, and reliability of these things too. Uh, वॉल्यूम कम है, आवाज नहीं आ रही सबको, यस सर, आ रही है आवाज आपकी। कम आ रही है। नहीं, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर देना सर, स्लो आ रही है। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ। चलो अच्छा, जी। तो हमने कहा था कि हम रिसर्च को तब ही शुरू करेंगे अगर हमें कोई गैप मिलेगा, और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हमें रिपीट करना पड़ता है, और वो रेपिटिशन जो है दैट इज़ टू डिटेक्ट दी validity of the procedures, equipment, and techniques we use, and to determine the reliability of a research. For example, if a person has done research already and have given evidences. For example, we gave example that the metformin is a disease, is a medicine for diabetes, so this can affect kidneys, for example. So we have given we somebody has already taken research and has concluded that metformin is affecting kidneys. So we he used a small sample size, used a certain procedure or methods or techniques on which we have certain objections. So we can repeat this research in order to determine validity of those procedures or to see reliability, either this conclusion is correct or incorrect. So sometimes we need to do it, but otherwise we mostly see a gap, and we determine the new answers of the questions. तो हमने कहा था कि why we do research, because research is we are curious, and we need to apply this knowledge. Sometimes it is just to extend our knowledge, or sometimes it is to uh, solve a genuine problem. So then we have already determined the characteristics of research. The first one was systematic, second one it is based on observation, and then we said it is following certain philosophies, background knowledge. We said the procedure, methods, and techniques that we use are valid and reliable, correct and repeatable. And the design and everything that we are using, and we ourselves are unbiased and objective. We don't have our interest in changing anything that is actually not happening in experiment or in the nature. So then there are few other characteristics of research that should be uh, there. For example, the research is in controlled environment, it is rigorous, it is systematic, it is valid and verifiable, it is empirical, it is critical. What is control? For example, if we have, so this control is actually on variables. If we have control on variable or not. If we don't have control on variables, then or conditions, then variable क्या होता है? Any factor that एक can नहीं। change its value. There are certain conditions that are always fixed, but there are certain values that are changing from time to time. So the things or the values that change themselves are called as variable. So these variables, there are a lot of variables. So if we have control on them, then it is called control. For example,
we have already an example that metformin is affecting kidneys. So you are bored of this example, but I have to give this again and again. पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में आ गई है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको हमने कहा था कि 3 तरह से हम इसको कर सकते हैं, 3 डिज़ाइन हमारे पास हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हम देखें कि ऑलरेडी जिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब की हुई है मेटफॉर्मिन डॉक्टर्स ने, हम उनका ब्लड सैंपल लें और देखें कि उनके क्रेटिनिन और यूरिया के लेवल्स क्या हैं। उनको हम नेचर में जो लोग नहीं ले रहे मेटफॉर्मिन और उनको डायबिटीज़ है, उनके क्रेटिनिन और यूरिया के साथ कंपेयर कर लें और हमें पता चल जाएगा कि चेंज हो रहा है उसकी वजह से, मेटफॉर्मिन की वजह से या नहीं हो रहा। दूसरा मेथड ये था कि हम 10 लोग लें जो डायबिटिक हों, हम उनको लैब में लाएं, हम उनको के 2 ग्रुप्स बना लें एक जैसे, और फिर हम देखें कि एक को हम मेटफॉर्मिन दें, जो क्वांटिटी हम डिटरमिन करें वो उनको दें, और हम उसके बाद जो है वो कंट्रोल वाले जो हैं उनको ना दें, उनको कोई और मेडिसिन दें, इंसुलिन दें, और फिर हम इनके ब्लड सैंपल लें और इनको क्रेटिनिन और यूरिया हम जो है वो डिटरमिन करें। तीसरा ये हो सकता है कि हम एक ग्रुप लें और उसको मेटफॉर्मिन देने से पहले उसमें क्रेटिनिन और यूरिया हम डिटरमिन करें, मेटफॉर्मिन दें और उसके बाद क्रेटिनिन और यूरिया डिटरमिन करें। तो अब ये 3 डिज़ाइन है हमारे पास। फर्स्ट डिज़ाइन में हम नेचर के अंदर देख रहे हैं कि डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब की हुई है, ज़ाहिर है डॉक्टर टू डॉक्टर डिफरेंट डोजेस प्रेस्क्राइब करेंगे मेटफॉर्मिन की। सो डोज जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह से हम अगर पेशेंट्स का कोई सर्टन लाइफस्टाइल है, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, वो कुछ ऐसा खाते हैं या उनकी कोई हैबिट्स हैं उस तरह की, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई नहीं करते हैं, हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने घरों में रह रहे हैं। वी हैव टेकन देम फ्रॉम पॉपुलेशन, हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय इसके कि हमें ये पता है कि ये मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो this research has control on other variable that one of the variable that they are taking metformin or not, but no other controls उनके लाइफस्टाइल पे, क्वांटिटी ऑफ मेटफॉर्मिन पे, अदर जो डिजीज़ हैं उनमें, इसके अलावा उनके जो हैबिट्स हैं उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम 10 लोगों का ग्रुप, डायबिटिक लोगों का ग्रुप अगर हम लैब में ले आए हैं तो फिर हमारा उन पे कंट्रोल है। Then we can give them exact quantities of metformin we want to give them. We can change quantities of metformin. Then we can prescribe them the lifestyle they have to go through. They cannot exercise if we say, they can exercise if we say, and how much long time they have to do that exercise, what type of exercise, type of meal we want to give, and the timings of the uh, ingestion of this metformin tablet, and certain other things. So we can control all these things. So in research we have control on variables. अच्छा, उसके बाद जो बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन है उसमें भी हमारे पास कंट्रोल है कि हमने पहले उनको किया और उसके बाद किया, और इसमें हमारे पास कंट्रोल है कि आप उन्हें कितनी क्वांटिटी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो रिसर्च में मोस्टली वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल। फिर इसकी बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सी रिसर्च कितनी बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी। ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा वेरिएबल्स पे कितना कंट्रोल है। क्योंकि ये कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ हैपनिंग इन नेचर, तो हो सकता है उनके किडनी किसी और डिजीज़ की वजह से ख़राब हो गए हों, उनके किडनीज उनके किसी लाइफस्टाइल की वजह से ख़राब हो गए हों, हम समझ रहे हो कि मेटफॉर्मिन की वजह से, या उनके किसी खाने की वजह से, कोई इस तरह से, वो मेटफॉर्मिन की वजह से नहीं होंगे, वो किसी और डिजीज़, किसी लाइफस्टाइल हैबिट की वजह से ख़राब होंगे, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि उनकी किडनीज ना ख़राब हुए हों क्योंकि उनके खाने में कोई ऐसी चीज़ हो, उनकी हैबिट में कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उनकी किडनीज ना ख़राब हुए हो, मेटफॉर्मिन उसको ख़राब कर रही हो, लेकिन उनकी जो हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, जो मील है, उनकी वजह से, या कोई और मेडिसिन वो ले रहे हैं उसकी वजह से वो बच जाते हैं। लेकिन जब हम उनको लैब में लेके आएंगे तो हम दोनों ग्रुप्स को एक जैसा ट्रीट करेंगे। उनमें से
ऐसे नहीं होगा कि कुछ तो कुछ और मेडिसिन ले रहे हो और साथ मेटफॉर्मिन ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे कंट्रोल में होती हैं इन ऑर्डर टू। इसमें तीन चीज़ें हैं ना, एक मेटफॉर्मिन है, एक जो है वो किडनी डिजीज़ है। तो metformin is independent variable, kidney diseases are dependent variable, and then we can say the creatinine and urea are dependent. So there are various other variables. हम सिर्फ इन दो वेरिएबल्स के जो लिंक है उसमें इंटरेस्टेड है कि हाउ मेटफॉर्मिन इज इंक्रीजिंग क्रेटिनिन एंड यूरिया, हम इसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन कुछ और वेरिएबल्स हैं लाइक ऑक्यूपेशन, लाइक लाइफस्टाइल, लाइक मील्स, अदर मेडिसिन, दे कैन चेंज दी क्रेटिनिन एंड यूरिया। तो हम उनके इफेक्ट को निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको कैंसिल आउट करने का तरीका ये है, या तो उनको उन वेरिएबल्स को ख़त्म कर दें या फिर दोनों ग्रुप्स में एक जैसा हो। तो दैट इज़ ओनली डन बाय कंट्रोल ऑन वेरिएबल्स। सो रिसर्च एक्टिविटी इज़ इन कंट्रोल। तो जितना ज़्यादा कंट्रोल हमारा वेरिएबल्स पे ज़्यादा होगा उतने हमारे रिजल्ट रिलायबल होंगे, मीन दे कैन बी रिपीटेड एंड दे वुड बी गिवन सिमिलर when we repeat them. So then the other thing is the research is rigorous. It means the protocols, the methods, the techniques, they are and design, they are implemented strictly. We cannot forgive anything. We cannot do it loosely. We have to implement each and everything. For example, if we have to give metformin of 50 milligram per ml, then we have to give it. We cannot give it 50.5 milligrams in case of research. We cannot, for example, we have to give it at 7 a.m. We cannot give it at 7:30, 7:15. We have to give it at exactly at 7 a.m. Similarly, uh, if we determine urea and creatinine, we have to take blood sample at, for example, 1 p.m. Then we cannot take it at 1:10. We have to take them exactly at, we know the biosystems, they are actually in physics or any other sciences, it is not uh, that sensitive, but in biosystems the things they are very sensitive. We know there are rhythms in body, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा हार्मोन्स के भी रिदम है, और बाकी बॉडी के सारे जो सिस्टम्स हैं, सेल्स के अपने रिदम है, कब उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन शुरू करनी है प्रोटीन के लिए और कब ट्रांसलेशन शुरू करनी है, ये सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी डिटर्मिंड है, उन्होंने टाइमिंग सेट की हुई है। तो दैट इज़ थ्रू इंटरनल क्लॉक्स दैट आर लिंक्ड विद द एक्सटर्नल क्लॉक्स, एक्सटर्नल डे एंड नाइट, द लाइट साइकिल उसके साथ लिंक्ड अप हैं। हमें इसके बारे में पता है कि आपने फिजियोलॉजी किससे पढ़ी थी? सर डॉक्टर शकीर रजा से। हाँ, आपने तो मेरे टीचर से पढ़ी है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि ये रिदम्स हैं। तो ये हार्मोन्स के भी उसी तरह रिदम है, बाकी बॉडी के जितने भी हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो फूड का पैसेज है उसकी अपनी टाइमिंग है कि कहाँ पे कितने टाइम के लिए जो इंजेक्शन आपने जो मटेरियल इंजेस्ट किया है वो कहाँ पे कितने टाइम के लिए रुकेगा, और कौन कौन सी डाइजेशन उसमें होनी है। तो ये जो टाइमिंग्स हैं सारी, किस तरह की फूड होगी तो वो कितना टाइम उसको रुकना चाहिए। प्रोटीनेशियस फूड जो है वो ज़्यादा टाइम लगाएंगी, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जल्दी पास ऑन होती हैं डाइजेस्ट। सो अगर हम टाइमिंग चेंज कर दें, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन तक हम टाइम चेंज कर दें, तो हमारी जो रिसर्च है उसके रिज़ल्ट ही गड़बड़ हो जाएंगे। तो हमें टाइम को, प्रोटोकॉल्स को एग्जैक्टली फॉलो करना होता है। वी कैन नॉट, हम इसमें कोई जो है ना वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। सो it is rigorous mean everything is implemented strictly so that the results are not changed. Then systematic, the research is systematic. We know we are following scientific method and we cannot change the steps of that scientific methods, हमने कल भी इस पे बात की थी। Then we have
validity and verifiability. We know the methods and everything we are using should be correct, and that is called as accuracy. And verifiable हमने कहा था कि it is precision. Research are the results are repeatable, mean the results they should be similar when we repeat the research. Then research is empirical. Research is empirical mean it is just an extension of previous knowledge. It is nothing new, and it is only uh, mean it is not like you would get an idea that is out of your subject. It is just extension of your previous knowledge, and it is also based on observations. And empirical mean it is based on observations, and it is based on previous philosophies. So it is not theoretical knowledge. It is हमें पता है कि knowledge क्या होता है. Anyone? आज आपकी अटेंडेंस भी कम है, 21 लोग हैं, बाकी कहाँ हैं? सर इन्फॉर्म तो किया है, ग्रुप में शेयर किया है हाँ, बाकी स्टूडेंट्स। अच्छा चलें अटेंडेंस इसकी लगाया करें ना. आप जी आ जी रहे हैं? सर, जी सर। ठीक है, अटेंडेंस इसकी लगाया करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो मेरे साथ शेयर कर दिया करो. ठीक है, जी जितने सर, पार्टिसिपेंट होते हैं. ठीक है, जी सर, अच्छा एट द एंड ऑफ क्लास जब एंड हो रही हो तो जी उसे ले सर, लेना. अच्छा नॉलेज तो इंफॉर्मेशन है ना, कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन. देन वी हैव साइंटिफिक नॉलेज एंड नॉन साइंटिफिक नॉलेज. ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज कौन सा होगा? दैट इज बेस्ड ऑन बिकॉज साइंस. व्हाट इज साइंस? साइंस इज द observation. So scientific knowledge is based on the observations, and non-scientific is not based on observations. So observable things. Observable mean we have five conscious senses. A lot of other senses, but conscious senses are five. So by using these five senses and by using any aid, we can observe anything. Like machines, we can use. Like we are using the uh, that is the sphygmomanometer for blood pressure and various other machines. So they are aid. If we can observe anything by using aid or by our conscious senses, five senses, then we say these things they are observable, they are existing. So science only believes in these things in order to keep its standard maintained. So the empirical mean research is empirical mean it is based on observation and previous knowledge. Then the research is critical. It means it is not a simple activity that you will do and everybody would appreciate it. It needs critics. It needs questions. When you will present your research or you will give rise to your idea, people would ask you questions. Why you did this? What is benefit of this? How you did this? Why you use this procedure? Why to design this research? And research withstand all these critics. So it should withstand. And it is not negative critics, it is positive critics because the critics adds to the research. So for example, when an author or researcher writes a research paper sent to the for publication, there are experts or reviewers. They review it anonymously. Review it. The journals they send those research article to three or four reviewers, and those are expert in that field in anywhere in the world. So they have to judge the quality of the manuscript. They have to judge the quality of the research work done. So they can raise a lot of questions that the authors have to or the researcher have to answer. So it is when they answer those questions, their research work get improved. So this is all about the characteristics of research.
Then we have types of research. We have on the basis of applications, on the basis of objectives, on the basis of inquiry mode. We have reasons to categorize the research. Again, it is man-made, so the definitions could be overlapping, and they are not physical things because it is philosophical. So but the basic concept remains same. So on the basis of application mean this research is applied or it is non-applied type of research. We can categorize the research into basic and applied research, or pure and applied research. Pure and basic are same. So a pure or basic research is that research which is not going to make a new product instantaneously. Uh, it is not going to do any invention or to do well-being of any community or animals, human. It is just for the extension of knowledge. And applied research always lead to improvement of any services, management, or the invention of any product, uh, the discoveries. So applied research is, for example, if we have to now for COVID, the scientists, they are trying to, virologists, they are trying to make a vaccine. So they are doing applied research because the end product would be vaccine that would improve the quality of life. Similarly, the people who are working on the tests, screening tests, they are also doing applied research. At the end, there would be a test kit for testing. And the pure research is not like that. For example, if in this scenario of COVID, few people they are determining how COVID is affecting liver of the patients, the lungs of the patient. So they are not going to directly improve the quality of life or the well-being of the patients. So later on, there may be we would have knowledge that lungs are also affected, liver is also affected, so we can protect those organs also. Similarly, if a person or a researcher is doing research on the prevalence of COVID, so he says in Pakistan it is 15% people have COVID. So this is not going to improve anything itself. Later on, there could be management that 15% patient of COVID are present. So we need how many doctors, how many hospitals, how much testing kits and the vaccine. But it is not itself improving anything. It is just an extension of knowledge. It is only a knowledge. Previously, we did not know that there are 15% people who are having COVID. So it is just increasing our knowledge. So applied and the pure or basic, they are two different things and they are distinct because of the discovery or invention that is done in case of applied research. Then on the basis of objectives, we can we can categorize research into four categories: descriptive, correlational, explanatory, and exploratory. So this is, we have objectives of research. For example, our objectives are to determine the prevalence of uh, COVID in Rawalpindi. So this is only a description, this objective. It is only a statement. So the objective is descriptive, so would be the research. For example, in this case, the answer would be that there are 15% COVID patient in Rawalpindi. So this all is in the form of description. There is no relationship between two variable or anything. It is no explanation why. We are not asking why there are 15% people in
affected with COVID in Rawalpindi. We are not going to say that how they are affected. We are not saying that there is COVID-19 is affecting the quality of life of the patients in Rawalpindi. That would be correlational. So in descriptive, it is only the objectives of the research. They are descriptive. They are in the form of statement. They are not giving any relationship, any explanation, any exploration. So in case of correlational research, the research the objectives are to find out a relationship between at least two variables. For example, we said that the COVID-19 is to determine the effect of COVID-19 on the quality of life of patients. So there is a correlation between two variables. One is COVID-19 and another is quality of life. So the COVID-19 is independent variable and quality of life is dependent variable. So this objective is correlational objective. So research would be correlational. The same is, for example, metformin is affecting kidney diseases. So there is a correlation between metformin, quantity of metformin and creatinine and urea levels. So this is the metformin and kidney diseases are urea and creatinine. They are in relationship. We have to determine this relationship. If objectives are written in this form, then the research would be correlational. And then there is explanatory research. Explanatory, as it shows, is explanation of any phenomenon. For example, we say the uh, COVID-19 is affecting the quality of life. So how COVID-19 is affecting quality of life? Why COVID-19 is affecting the quality of life? So this would be explanatory. In most of the cellular research, there are or the in physiology, it is explanatory research that shows the explanation of the processes occurring in the body, how receptors are attached to their ligand and how they are showing internal intracellular responses. So explanatory is explanation. If objectives are to explain any phenomena, anything, how, why, so that would be an explanatory research. Exploratory research is from exploration, to explore. For example, we have to do a larger project. First, we do a small study. For example, if we have to determine uh, the effect of metformin on kidney diseases, then we first have to determine the metformin, how many people are getting metformin, they are prescribed metformin. For example, only 0.5% people are prescribed with metformin, then there is no use to do this research because most of the doctors, they are not already writing or prescribing metformin to the patient. So metformin, if it is affecting kidneys, even then there is no need to determine it because population is not being affected. So explore it. In this case, we will do first, we will determine prevalence of the or we can say the percentages of people getting metformin, being prescribed metformin. So we'll do a pilot study, a small study. Sometimes we need to standardize our procedures, our tools, equipment, or questionnaire. So we do a small research that is called as a pilot study. So if we get any evidence in pilot study, for example, if we find that about 70% diabetic patients are getting metformin, then we can explore either it is affecting kidneys or not. Then it would be useful. So exploratory is based on evidence of the small study. Exploration based on the small results of the small study or pilot study. So these four type of research: descriptive, correlational, explanatory, exploratory. It is dependent on type of objective, and most of the time these four are characteristics are present within same study. For example, one objective could be descriptive,
another could be correlational, and other could be explanatory, and other could be exploratory. So these are not that independent. They are single research study could be descriptive, correlational, explanatory, and exploratory based on its objective. For example, if we designed a project, we have to determine the first objective is to determine the prevalence of diabetes. So it is descriptive. Another is how the relationship of diabetes and blood pressure. It is correlational, correlation between blood pressure and diabetes. Third one, how diabetes increase or decrease blood pressure. So that would be explanatory. We have to determine. So these all characteristics could be present in one study. Then we have inquiry mode. Inquiry mode means in which form you will get your data or information. It could be quantitative or it could be qualitative. We know already that what is quantitative and what is qualitative. Quantitative is in the form of numbers, qualitative is in the form of descriptions, in the form of statement, in the form of wording. So the qualitative and quantitative, they have different characteristics. For example, we determine, we ask somebody, we have a questionnaire, we ask his height. He would say his height is 5 feet 2 inches. So this is same for everybody. This is quantity. This is the same for me, for you, for the person who described this, for everybody. So the quantitative, they are objective. Quantities are objective, mean they have same meaning for everybody. In case of qualitative data, qualitative information, if we ask a person, uh, for example, we have certain thing, we ask taste of that thing, and they say it is sweet, it is bitter, it is less sweet, it is super sweet. So these are qualities. In case of height, for example, if we ask a person, he said I am tall, another say I am dwarf, another average. So we don't know what is average. Average for you could be 5 feet 3 inches. For me, it could be 5 feet. Another person would say the average is, for example, 6 feet. So in case of qualitative, that is, for example, if we ask blood pressure, quantities are 120 by 80, 130 by 90, for example, and 100 by 70. So if we see, one is 100 by 70 is actually low, 120 by 80 is normal, 130 by 90 is high. But if we ask a person in questionnaire what is your blood pressure, and we say low में blood सर pressure, जी सर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि इसका पर्पस रिसर्च में क्या है। ये इसका कॉन्सेप्ट जो पर्पज अभी ये आप है, समझा रहे हैं वो समझ आ हाँ रहा है, लेकिन रिसर्च ये टाइप्स क्यों है? ठीक है। जब आप डाटा लेंगे ना, जब आप कोई डाटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी मशीन से डाटा लिया, लाइक आपने पीएच डिटरमिन की। पीएच आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? एक स्ट्रिप से कर सकते हैं और एक आप पीएच मीटर से कर सकते हैं ना। ठीक है, पीएच मीटर से करेंगे तो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि पीएच 7 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, दैट वुड बी क्वांटिटेटिव। अगर आप स्ट्रिप यूज़ करते हैं पीएच के लिए, तो वो आपको बताएगा कि ये एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, ये बेसिक है, ये टूवर्ड बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको नंबर में नहीं बताएगा पीएच, दैट वुड बी क्वालिटेटिव। और आपको वो ज़ाहिर अपनी जो आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, आपके पास जो डाटा आएगा, आपने जिसको एनालाइज करके आपने एट द एंड कंक्लूड करना है, तो वो फॉर एग्जांपल आपका काम ये है, आपको ऐसे आपने ग्रो किए हैं माइक्रोब्स जो जिन्होंने किसी जिनका ग्रोथ का ही आपको तब पता चलेगा जब आपका जो मीडिया है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इस सर्टन मीडिया के ऊपर हम ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर रहे हैं,
तो हमारा इंडिकेटर ये है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे मीडिया एसिडिक हो जाएगा। तो आपके पास अब दो तरीके हैं चेक